Hello everyone, welcome to another special session of LexDialogues. आज आमे टिके कथा हबा from our previous session रे हम माने डिस्कस कले regarding evolution of our legal system all over world रे and India context रे legal system legal practice केमती evolve कला Indian system रो legal system रो development end रे आमे pre इंडिपेंडेंस टू स्टार्ट करिकी मुगल एरा टू स्टार्ट करिकी ब्रिटिश एरा एंड मॉडर्न इवोल्यूशन विषय कथा हले मॉडर्न इवोल्यूशन रो डिटेलिंग कला परे आमे आसी की अटकिले जोटी एडवोकेट एक्ट एस्टैब्लिश हला एंड बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हला आजिरो सेशन रे हम माने टिके डिस्कस करिबा अबाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया अबाउट इट्स फंक्शन and overall judicial system को bar council of India can be govern करे and different advocates different executives different officers तंकर selection procedure bar council memberships and entire structural organization structure जोटा से विषय आज हम discuss करिबा so let's go to the subject now तो हमें लास्ट सेशन रे डिस्कस करले अबाउट इवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम तापरे हमने एटा एस्टैब्लिश करले कि गोटे बार काउंसिल सोसाइटी फॉर्मेशन हला एंड बार काउंसिल एक्ट हला बीसीआई फॉर्मेला तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रो फॉर्मेशन तार इनिशियल स्ट्रक्चर केमिति थिला एंड एबे कॉन्टेक्स्ट रे केमिति इवॉल्व करिछि एंड यार रूल्स ऑफ केमिति तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी नीड a body like as I have told that any profession whatever it is how much noble even the profession is but you definitely need a regulatory body but without regulation because all means professionals who are all the lawyers and advocates cannot equally they are not equally behave or like to regulate their action to protect themselves to welfare of the advocates so one apex body need to there like for legal system Supreme Court is the main apex body to regulate the disciplinary actions or other aspects of the advocates Bar Council of India is there त माने जतिक सब एडवोकेट्स रहले जतिक सब जुडिशियल ऑफिसर्स रहले तांकर एक्टिविटीज तांकर डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस तांकर वेलफेयर एंड तांकर फर्दर इवोल्यूशन एडिशन क्वालिटेटिव एडिशन पई तो एपेक्स बॉडी हैला बार काउंसिल ऑफ इंडिया सो बेसिकली इट रेगुलेट्स यस जोटा कि हमरा सेक्शन 4 ऑफ द इंडिया एडवोकेट्स एक्ट जोटा 1961 ने फॉर्म हेतला सेक्शन 4 रे क्लियरली मेंशन हेछि हमरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो सेमती हमरो स्टेट पई रहइबो स्टेट रे आन हमरो टोटल अराउंड केते 28 स्टेट्स अछि प्लस यूनियन टेरिटरीज अछि तो सेई जो स्टेट गुडा को भी रेगुलेट करिया दरकार कारण जदे गोटी एपेक्स बॉडी रहइबो अन ता तळे इट इज नॉट इजी टू रेगुलेट एवरीथिंग तो स्टेट बार काउंसिल रहउची जोटा के हमरो प्रति स्टेट गोटे बार काउंसिल रहउची हां पॉइंट टू बी नोटेड दैट देयर आर 25 बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल्स आर देयर गोटे स्टेट माने दीटा स्टेट रो भी गोटे बार काउंसिल होच कॉमन बार काउंसिल लाइक महाराष्ट्र एंड गोवा इज देयर कॉमन बार काउंसिल इज देयर लाइक हमरो तमिलनाडु इज देयर तमिलनाडु एंड पॉन्डिचेरी पई पॉन्डिचेरी गोटे यूनियन टेरिटरी ता पई गोटे बार काउंसिल रहउची पंजाब एंड हरियाणा पे गोटे बार काउंसिल रहउची सेमती माने करी टोटल अराउंड 25 बार काउंसिल रहउची तो स्टेट बार काउंसिल रहउची तो से स्टेट बार काउंसिल गुडा को सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट रे define is mention is so basically these bar councils are like statutory bodies so ethi हम बुझे पड़े जे what is a statutory body what is the difference between constitutional body what is a executive body तो सेटा मोटे बहुत भलो जिंस like statutory or constitutional body is the most powerful one like election commission of India Supreme Court like even जो गुडा को बॉडीज गुडा को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है से गुडा को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
हमर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हे जाओ हम एटा कह परिबे कि लाइक एंटायर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स को कंट्रोल करिया पई मैनेज करिया पई जो individual affects bodies achi so those are like constitutional bodies. No, which bodies has been mentioned in the constitution itself. Means certain article has mentioned that is a constitutional body. But when parliament make any body or main parliament ro pass हे कि जो body बनुची that is a statutory body. Okay. Statute ru बनिला माने by law of the parliament बनिला. तो जेंति बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट बनिला तादिर सेक्शन 3 अछि तो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी हां ऑटोनोमस एज वेल ऑटोनोमस निजर सेल्फ डिसीजन ने एग्जीक्यूटिव बॉडी कोटा जोटा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रे माने प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव तो तांको ऑर्डर रे जोटा बनु जे पार्लियामेंट रो पास होनी डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव माने हमरो कैबिनेट रही छी कैबिनेट पास कला से प्रेसिडेंट गोटे साइन करदेले से जदि नीति आयोग हे गला आ पूर्व प्लानिंग कमिशन थिला एगुडा एग्जीक्यूटिव बॉडी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी केतले आपण डाइल्यूट करि परिबे बट स्टैट्यूटरी बॉडी रो सर्टेन माने तारो टिके रोल टा टी स्ट्रेंथन थाए तो तारो डिपेंडेंसी भी अधिक थाए तो स्टैट्यूट बॉडी आ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हाई स्टैट्यूट रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बर्तमान हम बुझिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज तो आमे भी आसीबा कमिंग टू स्टेट बार काउंसिल रो हमर कंपोजिशन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल को आ गोटे डायग्राम द्वारा आम बुझा टे तो बेटर हो जोटा ये करिया ओके लाइक हमर जो स्टेट बार काउंसिल टा रोची हमर मु कहली को 25 टा स्टेट बार काउंसिल अछि बट सपोज करन आपण गोटे प्रोफेशनल ग्रेजुएट हैला माने एलएलबी और बीएलएल इंटीग्रेटेड बीएलएलबी करी 3 इयर्स वाला और 5 इयर्स 3 इयर्स और 5 इयर्स वन स्टूडेंट कंप्लीट तो स्टडी कंप्लीट करी गला तो देन ही और शी हैज टू एनरोल टू ए स्टेट बार काउंसिल तो सी कोन करिया दरकार ना प्रथम गोटे स्टेट बार काउंसिल ले जाकी निजको एनरोल करिवो तारो पर्टिकुलरली से तले एनरोल करिवो ताकू तापरे पुनी गोटे जाकी डिस्ट्रिक्ट बार रे भी निजको एनरोल करिया को पड़िवो तो सेटू समान गोटे एनरोलमेंट नंबर देबे बट लैटर पॉइंट ऑफ टाइम ताकू ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई करला परे सेदा लाइसेंस टा अवेल करि परिबो जोटा आई थिंक सम 3 इयर्स होची तमरो ग्रेजुएशन सला once you enroll in any bar council तो within 3 years you have to qualify AIB exam तो जो जैसे AIB एग्जाम क्लियर करनी मे भी से वकालतनामा भरी परिबोनी माने का पे रिप्रेजेंट करि परिबोनी बट court he or she can practice or practice but cannot assist advocate yes तो सेगुड़ा को कर परिए बट यू कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लाइंट तो से स्ट्रक्चर टा बुझिया को हम पड़िबो तो हमर जे स्टेट बार काउंसिल रहउची वर्तमान कोन हला स्टेट बार काउंसिल तो तार कोन थाए दी प्रकार मेंबर थांदी वन इज नॉमिनेटेड मेंबर another one is elected member nominated member कौन जो मानु को माने एक्स ऑफिसर मेंबर थांती एक्स ऑफिसर माने बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट से पोजीशन रे रहिले माने से ऑब्वियसली द मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल हे जिवे की रहउचंती हमर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल एजी ऑफ स्टेट होची हमरा आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा जो आर्टिकल 165 कहली ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एबे बुझबेला त जेतो हम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हेची तो ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 165 रे रह गेला माने ही इज ए नॉमिनेटेड मेंबर तो सेमती इलेक्टेड मेंबर कुकी and he is the highest legal officer of the state highest law officer of the state तो एडवोकेट जनरल है नॉमिनेटेड मेंबर बर्तन इलेक्टेड मेंबर माने दे विल गो थ्रू इलेक्शन प्रोसीजर तो ये जो इलेक्शन प्रोसीजर कहा द्वारा इलेक्टेड हेबे द मेंबर्स मेंबर्स माने जो माने एनरोल करिथिबे माने कोन जो माने एनरोल करछन स्टेट बार काउंसिल से माने ताको इलेक्ट करिकी पठेबे तो एठी के रहले
और लाइक माने जो माने एनरोल स्टेट बार काउंसिल जो माने एनरोल करछंती बट एठी गोटे कैच अछि कि माने केते जण मेंबर रहबे तो इन द एडवोकेट्स एक्ट इटसेल्फ दे हैव मेंशन देयर आर 3 क्राइटेरिया आर देयर 3 क्राइटेरिया कोन जदि एनरोल मेंबर 5000 रु कम अछंती माने स्ट्रेंथ ऑफ द बार काउंसिल बार स्ट्रेंथ जदि 5000 रु कम लॉयर्स अछंती स्टेट बार काउंसिल ईच इंडिविजुअल स्टेट बार काउंसिल एट लिख दोजी मेंबर्स हां सपोज टोटल एनरोलमेंट इज ए सेथिरे जदि 5000 टू लेस अछंती स्ट्रेंथ माने 5000 लॉयर ही एनरोल हेजंती कम तार मेंबर रहिबे 15 मेंबर्स 15 इलेक्टेड मेंबर्स रहिबे कहारो स्टेट बार काउंसिल 15 इलेक्टेड मेंबर सपोज 5000 टू 10000 भीतर अछंती 10000 भीतर अछि दे विल हैव 20 मेंबर 20 मेंबर्स सपोज 10000 ऊपर अछंती सपोज 10000 ऊपर अछंती देन 25 मेंबर्स तो मैक्सिमम केते हला मैक्सिमम 25 इलेक्टेड मेंबर्स से इलेक्टेड मेंबर माने केमिति हला वोटिंग द्वारा दे विल बी इलेक्टेड तो बर्तमान सपोज नेले ओडिसा वी टॉक अबाउट ओडिसा बार काउंसिल ओडिसा बार काउंसिल ले हमर केते अछंती 20 इलेक्टेड मेंबर्स 20 इलेक्टेड मेंबर्स माने अछंती हमर केते 5000 टू 10000 भीतर हमर स्ट्रेंथ अछि 12 स्ट्रेंथ तो जो 20 इलेक्टेड मेंबर्स रहिले सेमानक भितरु पुनी दे विल बी इलेक्टेड ए चेयरमैन दे विल इलेक्ट ए चेयरमैन एंड वन वाइस चेयरमैन गोटे चेयरमैन इलेक्ट हेबे गोटे वाइस चेयरमैन इलेक्ट हेबे केमिति इलेक्ट हेबे दे विल इलेक्टेड बाय दिस इलेक्टेड मेंबर्स आज गोटे कैच अछि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कैन वोट फॉर द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन तो एटा गोटे एग्जीक्यूटिव रे इन्फ्लुएंस भी रही पारे जोटा रहिबा कथा मे भी नुहे बट in the provision itself is there advocate general of state can attend every meeting of the state bar council as well he can vote for the chairman and vice chairman but he cannot be a chairman एथरो हम क्लियर हला माने स्टेट बार काउंसिल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर हां आउट क्वेश्चन एटी जस्ट माने ये समझते में लाइक जो स्टेट गुडा करे मल्टी माने कॉमन बार काउंसिल अछि लाइक महाराष्ट्र एंड गोवा है महाराष्ट्र गोवा हे गला महाराष्ट्र तमिलनाडु पडिचेरी हे गला पंजाब हरियाणा हे गला से कंडीशन रे से मानकर हाउ मेनी एडवोकेट जनरल यस नॉमिनेटेड मेंबर के जडा रहबे नॉमिनेटेड मेंबर जेतेटा स्टेट अछि समस्त गोटे एडवोकेट जनरल रहबे तो सबु एडवोकेट जनरल सेथिरे रहबे गोटे नॉमिनेटेड मेंबर तो एथरो आपण जानले जे जेतेटा स्टेट कॉमन बार हेले सेतेटा एडवोकेट जनरल नॉमिनेटेड मेंबर हो जदी गोटे स्टेट र बार काउंसिल लागी ओडिसा रे एडवोकेट जनरल जड़े नॉमिनेटेड मेंबर जदी सेम टाइम रे जदी महाराष्ट्र आ गोवा हैला ताले दी जड़ा नॉमिनेटेड मेंबर तो जानले हाँ दिल्ली रे कौन हुए दिल्ली यूनियन टेरिटोरी जाउची दिल्ली रो एक्सेप्शन होची सेथिरे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहिबे सीए रहिबे नॉमिनेटेड मेंबर अपार्ट फ्रॉम दिस आउ कोठी किछ एक्सेप्शंस नाही वर्तमान आमे देखिबा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रो कंपोजिशन मो कहली देयर आर 25 individual state bar councils are there so 25 numbers are there right up to 1 to 25 तो हमर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहला बार काउंसिल ऑफ इंडिया the bar council of India is composition is also two types of members are there one is like same as nominated and elected and elected ठीक है तो प्रथम नॉमिनेटेड मेंबर के जानियो नॉमिनेटेड मेंबर माने एक्स ऑफिशियो माने जो माने से पोजीशन ने रहिबे से ऑटोमेटिकली बार काउंसिल नॉमिनेटेड मेंबर लाइक नॉमिनेटेड मेंबर रे हमरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रे हमर रहले फर्स्ट अटॉर्नी जनरल the highest legal officer of the country India अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76
of the Indian Constitution. ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ବି ନିଜର ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ, ମାନେ କାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ କେସେସ୍ ନେଇପାରିବେ, ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମାନେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେସ୍ ବି ଲଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ କେସେସ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ସୋ ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଟେନ୍ୟୁର ନଥାଏ, ଯେବେ ପାର୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଇଟସେଲ୍ଫ ରିଜାଇନ୍ଡ, ନୂଆ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆସିବେ। ତ ଏଠି 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ନମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର, ଜଣେ ହେଲେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟିକଲ 76 ରେ ଯେ ରହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଆମର ଯେ ତୁଷାର ମେହତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତୁଷାର ମେହତା, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ। तो बर्तमान देखे इलेक्टेड मेंबर किए, इलेक्टेड मेंबर के सबू बार काउंसिल 25टा बार काउंसिल रहा, तो सबू बार जड़े जड़े मेंबर इलेक्ट है रिप्रेजेंट करेंगे। This is the state representation in Bar Council of India. Bar Council of India. तो एठी हमें देखले जो individual state bars अछि, जो elected members अछंती, executives अछंती, से माने जणों को nomination करंती Bar Council of India करिके पठेबे। तो 25 state boards, state bars, 25 and 25 elected members in Bar Council of India, elected members. ताकू छाड़ी की जो दिजन हमर रहले nominated members. तो एमानकर जो जिनसटा गला whatever, but one catch point is there in advocate general. I have told in the state bar council he can vote कौन पे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सिलेक्शन रे एडवोकेट जनरल राइट्स अछि, he can vote, but ए कंडीशन रे भी एडवोकेट एठी अटॉर्नी जनरल राइट्स नहीं, से कथा कहूछु को कंडीशन रे कि एठी भी प्रोविजन अछि कि दे हैव टू इलेक्ट अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ए चेयरमैन वाइस चेयरमैन सिलेक्शन रे एक्स ऑफिशियो और द नॉमिनेटेड मेंबर्स पनकर वोटिंग राइट्स नहीं, दे कैन नॉट वोट। तो एटा गोटे डिफरेंस जोटा माने बहुत भलो जिंस, बिकॉज़ एग्जीक्यूटिव रा इन्फ्लुएंस रहबा स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एटा गोटे रिप्रेजेंट करछि फेडरल स्ट्रक्चर, माने जोटा रे हमरो ईच बार काउंसिल आमे जदि फेडरेशन बळे धरियो से मानको रिप्रेजेंटेशन रहूची, जोटी हमरो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रे मेन निज स्टेट को से माने रिप्रेजेंट करूछंती। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिकम द अपेक्स बॉडी, तार अंडर रे आछि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बोथ टेक्स अथॉरिटीज फ्रॉम द एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। Section 3 gives the power to State Bar Council, Section 4 gives the power to Bar Council of India, and Section 7 onwards, like they have mentioned what is the power and roles and functions of the Bar Council of India. So we should know that, like what are the like powers of the State Bar Council. like Bar Council ला सेथ में बनाइ छ, मु कहले एडवोकेट्स माने एनरोल करिवे फास्ट। तो स्टेट बार काउंसिल ला पावर होची टू एनरोल द एडवोकेट्स, माने से जो एडवोकेट ता जने ग्रेजुएशन सरला ऑब्वियसली गोटे एडिशंस जोटा हबो सेटा स्टेट बार काउंसिल ला दायित्व जे गोटे ताको प्रोफेशनल चैनल टे प्रोवाइड करिवो, जोटा रे सी निज लीगल एस्पिरेशंस और लाइक ताको प्रैक्टिस करि परिवो। एंड सेकंड जिंस वाला लाइक डिसिप्लिनरी मेजर्स, माने हमें देखते हैं बहुत सारा कोर्ट रे बहुत टाइम हुए ना कଣ लॉयर्स माने रागी जाती, कागु क्लाइंट को खराब व्यवहार देखे देले, जजेस मानु को भी बर्तमान देखते हम यूट्यूब रे बर्तमान लाइव सेशन जो होची हाई कोर्ट वगैरह ये कि को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे अपन देखिथिबे जे लॉयर्स आ जज को भीतर फाइट हे जाउची। तो सेटा गोटे कोन माने जुडिशियरी रो गोटे मोरालिटी को हैम्पर करूची, गोटे इंटीग्रिटी को हैम्पर करूची। तो डिसिप्लिनरी मेजर्स माने गोटे लॉयर रो केमती माने तार कोड ऑफ कंडक्ट कोन रहया कथा, हाउ ही शुड बिहेव, माने एमती नुए जे फीस मन इच्छा चार्ज करूची क्लाइंट को, माने फॉल्स एश्योरेंस देकी ठकुजी। तो डिसिप्लिनरी मेजर्स में स्टेट बार काउंसिल पाखरे पावर अछि। मु जति की जानि छी स्टेट बार काउंसिल keeps record of all members of the bar council. Yes, records record की basically तमरो code of conduct गोटे record रखंती about your behavior and discipline. तो
लाइक अदर जिनस होची लीगल एजुकेशन स्टेट बार काउंसिल माने हमर कॉलेज गुडा करे बार बार लॉ सेमिनार्स गुडा का अरेंज होची ना नहीं से मन को माने अवेयरनेस कैंपेन करा जाउची ना तो स्टेट बार काउंसिल रो इवन लाइक सेंट्रल बार काउंसिल ऑल बार काउंसिल हैज अ गोटे मोरल माने गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर हैला केवल रेगुलेशंस वेलफेयर नुह लॉ रो जो प्रोपगेशन लॉ रो जो फर्दर जो एडिशन सब तो तापई निहाती एजुकेशन दरकार एजुकेशन को एस्पेक्ट रे स्टूडेंट्स पढ़िबे एट द सेम टाइम लॉ जो मानको पई ताकर भी अवेयरनेस भी दरकार तो सेथि पई एजुकेशन एस्पेक्ट रे रेगुलेटिंग कॉलेजेस थ्रू यूनिवर्सिटीज जति का लॉ यूनिवर्सिटीज अच्छी तांडरे लॉ कॉलेजेस अच्छी लॉ रो जो हम सिलेबस वगैरह अच्छी लॉ स्टूडेंट्स मानकर तांकर जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट अछि एगुडा को भी माने कॉग्निजेंस नियंती याको मॉनिटर करंती एंड आपै सजेस्ट भी करंती माने सेमाने सुपरविजन ये रे सुपरविजन सेटा को तो देखिला हमें डिसिप्लिनरी एक्शन भी नौचंती प्लस से माने वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट भी करछन माने से माने भी से माने किछि ग्रांट्स प्रोवाइड करंती जोटा कि से माने देखछंती किछि एडवोकेट जो फिजिकली चैलेंज अछंती कि कार ओटे क्राइसिस हे गला द मॉनिटरी दे आल्सो हेल्प ऑफिशियल एस्पेक्ट भी से हेल्प करती कि अपन देखंतु बहुत सारा कोर्ट रे जो माने माने ये चेयर रे विलिंग चेयर रे जीवा कथा से सब जिंस भी से माने कोर्ट को रिक्वेस्ट करी कि निजे फंडिंग ये करी से माने भी डेवलप कर वेलफेयर एक्टिविटीज माने भी करती लाइक नालसा सालसा भी जो होती माने फ्री लीगल एड भी ताकर कंट्रीब्यूशन रहे जोटा रे स्टेट बार काउंसिल रो भी बहुत बड़ भूमिका रहउची and protecting the advocate rights एमती नहीं जे advocate को रेगुलेट करछन advocates को किछि राइट नै advocates को भी बहुत सारा राइट्स अछि they are also part citizens and they are also they are contributing to the officer of the court as well तो तांको राइट्स भी प्रोटेक्ट करिया को दरकार जे से माने ओटे हार्मोनियस सिचुएशन ने जेमते रहंतु ओटे हार्मोनी रे से माने काम करन जोटा बेटर जस्टिस ता डिलीवर हे परिबो तो स्टेट बार काउंसिल रो एटा रहउ रिस्पांसिबिलिटी रहउची तो सेमती आमे जदी जीवा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज एपेक्स बॉडी तार रिस्पांसिबिलिटी आउट के हायर साइड रे रहउदिबो से ओटे माने जो कोन ही इज द ग्रैंडफादर कमिंग माने माने बापा हेले से जे बापा बळे तो सेठी कोन रहे सी भी सही जिंसो एथिकल रूल्स बनाए कि प्रोफेशनल रेगुलेशन कंडक्ट केमती रहबा दरकार कि ओटे एडवोकेट रो माने मेन एपेक्स से रूल बनाए एंड जब सेकंड टाइम देखिबा जदी स्टेट बार काउंसिल गुडा कर जदी कॉन्फ्लिक्ट हुए ओटे डिसिप्लिनरी कमिटी रे आपण हैप्पी नाहंती सजेशन रे आपण मे बी यू आर नॉट सैटिस्फाइड देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो आपण बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जोटे डिसिप्लिनरी कमिटी तांगर अछि से डिसिप्लिनरी कमिटी मेजर्स नहीं जोटा आमर स्टेट बार काउंसिल ले भी आमर जने प्रोमिनेंट लॉयर अछंदी लाइक विभू त्रिपाठी सी अछंदी आमर डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल से जने सीनियर एडवोकेट वी रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो सी अछंदी सेतिरे सेमती सबू स्टेट बार काउंसिल आ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रो जने डिसिप्लिनरी कमिटीज वगैरह थाए बिकॉज़ कमिटी पाखरे गले जिनसटा रिजल्व बेटर होई परिबो रादर देन गोटे लॉन्ग रन प्रोसेस जीवा एंड लाइक आ गोटे थेरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया गोटे भल रोल रहउची जोटी हमर इंग्लिश लॉज गुडा के चलीची माने कर सपोज यूके रे किछि न्यूआ लॉ आछि जोटा ह्यूमन राइट लॉ हो से माने तांका सेटा एफिलिएट करी कि से लॉटा केमदी इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे बेटर यूटिलाइजेशन हेई परियो ताकर टाई अप थाए तो नॉट ओनली दे आर वर्किंग इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया दे आल्सो वर्क दैट मींस लाइक कोर्ट continuously take reference from evolvement of new acts in different countries so तारो reference नहीं कि जदी सेटा लगे कि how it's applicable in India how आगो को एटा help करो support करिवो so yeah that माने they regular keep referencing and analyzing those things and जो perspective रे हमरो दरकार जदी पड़ला then do adopt that as well definitely so it is a good thing that we always adopt a good जोटा constitution में भी देखिदिले ransacking of the good things we adopted तो से माने obviously parliament law बनेबो but as a suggestive body statute body से माने आंको recommendation ए माने दियंती से माने भी नियंती so it is a good rapport between government and bar council of India अब आप जानते लीगल एजुकेशन टाकू से माने मॉनिटर करंती बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमरो लॉ एजुकेशन टाकू कारण को कॉलेज को आपण गोटे कॉलेज यूनिवर्सिटी रु मे बी माने तारो सर्टिफिकेशन आनी पारे बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल भी दरकार हां जोटा रिसेंटली हम गोटे बहुत भलो कॉलेज को मिलची हां को भी कॉलेज रो एफिलिएशन
ता अप्रूव बीसीआई ही करे स्टेट बोर्ड स्टेट बार काउंसिल रो बिना परमिशन या अप्रूवल रे जदि आपण कोनोसी लॉ कॉलेज करूछंती एंड सेटू स्टूडेंट्स बाहरुछंती तो सेटा that those certifications are not valid because that is not approved by the BCI. The reason is like once you are passed out then you will go to BCI माने स्टेट बार काउंसिल को तो आपण जिबे तार मेंबरशिप नेबे एंड फर्दर प्रैक्टिस पे जिबे तो पॉइंट हैला कि जदि आपनकर कॉलेज अप्रूव नहीं आपनकर स्टडीज बाय डिफॉल्ट अप्रूवल हैलानी तो इट इज डिफिकल्ट तो एबे रिसेंटली ओटे हमर वन ऑफ द ओडिसा रेपुटेड कॉलेज को भी हमर बार काउंसिल ऑफ एप्लीकेशन मिली छि जोटा बहुत बडे वेलकम जिंसो जोटा हम देखुतिले कि बहुत भल रे मिलला तांग एप्लीकेशन टा तो बार काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमने अगुर एप्लीकेशन नहीं थिले एप्लीकेशंस थिला स्ट्रीमलाइन थिले बट एबे कंप्लीटली दे आर माने बहुत भल काम करी से माने आगु बढ़ी छंती तो तापर ओटे लॉ रिफॉर्म्स रे जदी जा पॉलिसीज आसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रो सजेशंस थाए सदाले गवर्नमेंट सहित so overall I'll say that bar council of India is a apex body which not only just restrict itself to the regulation but its dynamics are very much wide that it also modifies the law means modified as a suggestive measure it helps means legal profession ta kendi better kari hobo ethical values ta kendi inculcate kari hobo moral duty moral conduct केंती a better judicial system टा केंती better streamline करी होबो और लोक मान को वेलफेयर रे केंती काम करी होबो तो ओवरऑल माने आदे तो बेसी किछि ऐड ऑन करिया को नाही बट वी जस्ट पावर एंड overall like we discussed the structure our integrity structure integrity केमती like we understood state bar council रा structure टा को बळ्या and similarly center रे bar council of India रा structure कोन ता nomenclature कोन state bar council and center bar council of India तांको भीतर relationship केमती and overall bar council of India रो nature of work कोन starting from new professional addition second taking care of all the officers सेमानकर वेलफेयर वेलबिंग थर्ड जति कि लॉ रो डिफरेंट एस्पेक्ट अछि स्टडीज ठू नै कि तार फाइनल एग्जीक्यूशन पर्यंत तो सेटा ठीक से होउची होनी ता ऊपर गोटे नजर रखिबा हो एंड ओवरऑल स्टेट रो एंड इन टर्म्स सेंटर रो ओवरऑल कंट्री रे लीगल सिस्टम केमिति स्टेबलाइज हबो तार डायरेक्टिव्स को ठीक से डेलीगेट करिवो and future को नेकी केमती expand करिवो propagate करिवो for a stabilized state so this is overall thing of BCI hope this will add to your studies and we wish you all कि आपनकर next day रे जो assessment exam अछि you will do good and जदि हमर ए reference रू जदि कि छामे कि एडिशन करिथिबो like this video, share with your peers and do subscribe this channel. Thank you very much. Thank you very much.